Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is AirTech. Hope you all are having a fantastic day. Let us begin with our today's podcast. So our today's podcast special guest is none other than Mr. Ajinkya Kalantri, who is the co-founder and working with Syscort. So over to you, Ajinkya. Can you please introduce yourself? Yeah. Thank you, Pawan, for bringing me here on this forum. So myself is Ajinkya Kalantri. I'm the co-founder of Syscort Technologies in Dubai and Syscort Global Services in India. So we are more often the IT services company where we work with different sectors and different verticals of the client to provide the managed services, team augmentation, ERP implementation, and digital transformation. This is the area which we work on. And now, since we are based in India and UAE, at the same time now we are expanding our footprints in US, UK. So this is a bit small about what we are as a Syscop. Okay, great. You mentioned that you have a base in India and UAE as well, right? And Yeah. for the audience, I kind of had an opportunity to work not directly with, but indirectly with Ajinkya. So you might remember that we kind of coordinated when I was working as an intern at Grindmasters. And I have to Yeah. say that Ajinkya is one of the most punctual person that I've ever seen because I was working in the marketing team at that point of time, and whenever we had some changes for the website and everything, he was on his always. I mean, he and his team, entire team, was always on the toes and giving all the work that is assigned by the CEO or someone, okay, or the marketing head MD. So he used to assign that to his team, and then it used to be done within fraction of minutes. So I have to appreciate that of Mr. Ajinkya. Thank you. Okay, yeah. So my second question to you is, why did you start Syscot, and what was your experience being a co-founder for this company? So Pawan, I will just take you a bit of the background what I am into. So first of all, I'm not a educationally qualified. Okay, I don't have any degree or anything. For whatever reasons, like personal, professional, I just took my dropout after 12th standard. And since 8th standard, I was doing the software programming, website designings and all Mhm, those things. So when I was in 8th, 9th, I did some projects for my school. And mhm, 11th, I got one good opportunity to do the project for the Mumbai High Court. Okay. And that time I got felicitated by CM. So those kind of thing happened and it motivated me was no, I can do something. Okay. And what happened is one unfortunate fortunately before actually getting into the actual graduation, mhm, I came to know what is the reality of the industry. mhm, And so after 12th actually I took admission to the BCA. So but when I was seeing this academics, since I know what is the reality in the world, I mhm. could not relate both of the things. Right, right. Okay. Mhm, I'm like, I was so fed up. No, mhm, I cannot tolerate this. mhm, And this is not how it is. So I don't want to go. I just want to do it in real life. So this is how I took a dropout and I started doing things on our own. In 2014, I started my business and my company. Obviously, it was a very since I'm the first generation entrepreneur, no family background, mhm. no professional background, no financial background. Just going outside the mainstream is very challenging Continue. because अभी इंडिया में क्या होता है भाई पढ़ो लिखो डिग्री लो नहीं तो शादी Mhm, के लिए लड़की कौन देगा इट्स अ mhm. बेसिक True. मेंटालिटी एवरी पेरेंट्स है Right, ओके right. and again still you are struggling, you don't have the stable, you won't have a stable income and the Mhm, mentality it is very happening. So going out of such a flow was very challenging first of mhm, all, which impacts your professional and personal both. But yeah, I was pretty firm कि नहीं यार कुछ तो करना है, एक mhm. तो फेल होगा बट करते तो है. Right, right. Let's not have that regret. Okay, so this is how we started. I started Syscort, got some projects. Absolutely. uh, क्या होता है देखिए when I started company I was 17, 18, something like that. Okay, Mhm, so what happens is कि बहुत सारी दुनिया की समझ अपने को भी तब नहीं होती है, हम एक अलग जोश में होते हैं. mhm, या तो even people have a different perspective looking at us mhm, uh, बहुत सारे challenges आए, हमने प्रोजेक्ट डिलीवर किए, mhm. बच्चा है पैसे के लिए. Oh, Like at okay. that time ticket Mhm. size were very small, 5,000, ten Right, thousand. right, right. So लोग पैसा नहीं देंगे. Mhm,
पैसा डुबाएंगे, काम डिलीवर हो जाएगा। एंड Yes. सिंस अगेन हम लोग स्टार्ट में थे तो हमारे पास वो कोई प्रोफेशनल या लीगल स्ट्रक्चर ऐसे कोई नहीं, टीम कुछ नहीं। Mhm, mhm, सो although we were putting hard work ना, तो mhm, due to this we could not go on the next level. तो ऑब्वियसली ये सारे चैलेंजेस आपके, एंड व्हाट हैपेंस देन इफ यू गो अदरवाइज ऑफ द क्लाइंट्स। अभी हम तो पहले तो लोकल क्लाइंट से डील करते थे, सिंस आई बिलोंग टू औरंगाबाद लाइक। तो व्हाट हैपेंड इज कि हम डिलीवर कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल mhm, रहा है, mhm. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू स्टॉप द सर्विसेज। Okay, ओके, okay. अभी एटलीस्ट दे, Mhm. बट you will, instead of getting money you will face a backlash from those people। यार ये तो काम ही नहीं करते, इन्होंने Right. हमारे सर्विसेज बंद कर दी। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज हमने फेस किया, एंड व्हिच गिव्स यू, एंड यू कैन नॉट गो एंड जस्टिफाई एवरीवन। mhm, ये बहुत बड़ा चैलेंज एज अ स्टार्टिंग इन अ टियर 3 सिटी वी फेस्ड। mhm, एंड ठीक है, इसमें से अनुभव लाइक वी जस्ट टुक एक्सपीरियंस, mhm, mhm. वी वेंट ऑन द नेक्स्ट लेवल। Right. ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़े 2000 लाइक, फिर हम स्केल बढ़ता गया प्रोजेक्ट्स का, Mhm. वी ट्राई टू बिकम। सो इन 2020 अगेन लाइक बिग ब्रेकडाउन कम एज अ कोविड। Right. Correct. Mhm, Things absolutely what happened within this time is we had got a big office, big setup, everything has to close mhm. because the problem happened in 2020 was a IT talent crunch Right. Correct. and remote working that Mhm. came। तो जो 4 लाख का बंदा है वो 20 लाख पे चला गया, हमारा तो Right. Mhm. रेवेन्यू आ रहा है Right. 4 लाख के हिसाब से, Right. Right. एंड अवर क्लाइंट आर नॉट दैट बिग कि वो 4 लाख का 20 लाख करे। Right. सो ऑलमोस्ट it was sort of completely restart for us because Mhm. retaining the talent was bit challenging, attrition was at a high, High. and बड़े कंपनी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे तो हम किस खेत की मूली है, लाइक Right. इट वाज Right. लाइक दैट। Mhm. तो तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक बड़ा पेन पॉइंट रहा which hampered our thing, and later on but then 2020 during this covid, after covid time we focused on the remote working। uh, we started our operations in Dubai, started hiring multinational people. So Mhm. we don't have to just rely on typical Indian. Indian people Right. to Right. delivery. And Right. this is how we got back into the track. And I, fortunately, it given us a 10x growth actually, just Okay. 2-3 years only। जो हम 6 साल 7 साल में नहीं कर पाए वो हमने Mhm. 2 साल में कर Social दिया। media. So this was a very good thing which happened to us, and this is what is like a, यहाँ तक अभी हम लोग हैं। Mhm. This is what now we are trying to expand bit more on the global side। Okay. That's great. That's really great because आपने जैसे बोला कि like you expanded from like right from working in Indian with Indian clients and Indian Yeah, employees, you transitioned towards like UAE and like hired multinational people as well yeah, from different nationalities as well. So yeah, which yeah. is a great thing. Okay, which brings me to like since you have kind of covered the challenges that you faced during this entire period, right? So like how was your experience expanding the business globally? I mean, बिकॉज बहुत लोगों को रहता है कि इंडिया में ही करते हैं, यहाँ के क्लाइंट्स लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट पीपल ऑलवेज ये कि अगर आप अर्न कर रहे हो डॉलर्स में, अगर वो वहां से आके यहाँ पे आ रहे हैं राइट इंडिया में, तो दैट इज अ गुड कन्वर्जन। और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि Yes, पैसा उससे ही बनता है कि यू एक्सपोर्ट द सर्विसेज, या फिर आप जनरली कोई भी एक्सपोर्ट करो, तो दैट इज हाउ यू मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो this आपका is actually the हम्म, fact। हम्म, This is the fact। You go ahead, then I will complete। Yeah। सो लाइक आपका एक्सपीरियंस लाइक कैसा था क्लाइंट्स के साथ, मतलब क्लाइंट्स को एक्वायर करने या फिर ऑफिस सेटअप करने के लिए लाइक इन दुबई बेसिकली, और लाइक व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू फाइंड लाइक वर्किंग फ्रॉम दुबई एंड इंडिया, व्हाट आर द डिफरेंसेस? See, if you ask me first thing, okay, मैं पहले I will cover कि इंडिया और दुबई में क्या हमें फर्क लगा। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना एज ए एंटरप्रेन्योर, वो दुबई में बहुत अच्छा है। ओके, if you want to form a company in Dubai, within a one day your company will get up। Okay, but it's unfortunate in India हम बोलते हैं कि ease of doing business बढ़ रहा है, even to get a GST number people have to struggle 3 3 4 4 months। राइट राइट। Okay, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको महीना भर लग जाएगा, टू जस्ट रेगुलराइज बिजनेस आपको 6 महीना लगेगा, विच, एंड उसके बाद भी इतने ज्यादा कंप्लायंसेस है। एज अ स्टार्टअप कंपनी या स्मॉल स्केल कंपनीज के पास इतना बैंडविड्थ नहीं है कि जो कंप्लायंस में इतना टाइम डाले। राइट। ओके, वो पीएफ हो गया, एम्प्लॉय रिलेटेड टैक्सेशन, एवरी डे द रूल्स आर चेंजिंग, डायनामिक्स है। इट्स सो नॉट easy for people like us to maintain those things, राइट। which is we found in Dubai। And again, law. Okay,
अभी फॉर एग्जाम्पल लाइक द वे जैसे इंडिया में था कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम अगर कंपनी ने एक जगह किसी को बंदे को बिना लाइक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के भी उठा लिया, अरे तुम आ जाओ हम सब कर देंगे, तो भाई इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, you until you do not formally exit from one company you cannot even get hired into another company. Okay, because वहां पे एक लेबर कार्ड बनता है हर कंपनी में. वंस यू एंटर वीजा एक तो आप देते हैं ना तो लेबर कार्ड देते हैं. जब तक एक कंपनी उसको कैंसिल नहीं करेगी अनदर कंपनी कैन नॉट हायर हिम. सो इट्स अ पीस ऑफ माइंड कि भाई ये बंदा अनएक्सपेक्टेड एग्जिट नहीं करेगा. इन इंडिया पीपल लाइक अरे मेरी ये दादी एक्सपायर हो गई है एंड वो दूसरे दिन देखेगा आई स्टार्ट ऑन लिंक्डइन आई स्टार्टेड वर्किंग एट दिस कंपनी. तो ये स्कोप we did not find in Dubai. And as a startup, as a SME, it gives us confidence and comfort to take a risk. That was the first thing. Law is very strict. Labor, both sides, for employers and employees also. So that is a pretty good, straightforward thing as a business friendliness. Obviously, cost is pretty expensive, but yes, अगर हम लोग stability ले पाए तो उससे अच्छा और कुछ नहीं. So that is the first thing. Another thing डेफिनेटली जो आपका बताना है कि एक प्रॉब्लम क्या है इंडिया में. whoever big companies are also इंडिया में IT, not only IT, intellectual property business, whether it's such या तो intellectual businesses, you take it audit firms, you take a chartered accountant, you take doctors, they don't have like time का वैल्यू अपने पास नहीं है. ओके, क्या होता है लाइक एकदम रियल लाइफ एग्जांपल है. एक बंदा है वो आएगा सीए के पास फाइल देगा, वो 10 लाख रुपए टैक्स भर देगा. बट सीए जब उसको मांगेगा कि सर मेरा फीस 5,000 है, अरे सर आपने क्या किया इतना, ही विल, इट्स अ रियलिटी. सो इन इंडिया आल्सो वी फेस सेम सिनेरियो कि भाई हमारे 4 रिसोर्स अगर 4 महीने के लिए काम कर रहे हैं, you are not paying them enough and you are expecting high quality services which is actually not matured market. So absolutely ये पॉइंट को मैं एग्री करता हूँ कि we still don't feel any good thing in India right now कि आईटी के लिए वो उतना, क्योंकि जो कॉस्ट बढ़ा है रिसोर्सेज का उतना नहीं है. Another thing is कि yes, absolutely when you expand abroad definitely currency conversion makes big sense, and that helps you good to give a revenue. Okay, so definitely जब आप expand करते हो you get to new people, new networks. Okay, definitely it's a very interesting things to do. And ऐसा है कि आप यहाँ 4 प्रोजेक्ट लो, बाहर एक प्रोजेक्ट लो, इट्स मोर इक्वल. बट यू नो दैट इज ऑल्सो स्टेबल. इंडिया में हमें प्रॉब्लम क्या दिखा है एसएमईज के लिए, आईटी इम्प्लीमेंटेशन इज 85% ऑफ द फेल्यूर. ओके, एक आईटी बिजनेस कैसा होता है, इट्स अ रिकरेंस रेवेन्यू पे डिपेंड होता है. सपोज लेट्स से यू आर वन ऑफ माय क्लाइंट, वी इम्प्लीमेंट लेट्स से ईआरपी सिस्टम फॉर यू. व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग देन, इट शुड बी नॉट वन टाइम असाइनमेंट. We implement, we consult for you, then you come back to us for support, then you may need a manpower for that. But एक यहाँ पे फंडा क्या होता है, मुझे ERP implement करना है बट मुझे लोग नहीं लाने, उसके लिए ऑपरेशनल जो क्वालिफाइड लोग हैं आई डोंट वांट टू ब्रिंग. सो व्हाट हैपेंस, इम्प्लीमेंटेशन आधे में रुक जाता है, इट गोज फेल्यूर एंड ब्लेम कम्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडर कि यू डिडंट प्रोवाइड एक्सपेक्टेड सर्विसेज. ओके, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और उनके खुद के 85% ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फेल्ड होते हैं. अल्दो लेट्स से सर्विस प्रोवाइडर को उन्होंने पे कर दिया, कंप्लीट कर दिया, बट उनके इंटरनली रिसोर्सेस ही नहीं है उनके पास जो वो चेंज अडॉप्ट करने के लिए रेडी है. बिकॉज क्या होता है कि उनको एक अनसिक्योरिटी हो जाती है कि भाई इफ वी कम ऑन द सिस्टम देन वी मे गेट ट्रैक्ड. तो जिसको ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी है, दे आर मोर इनटू अनसिक्योर्ड जोन. सो 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सर लाइक दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट गुड फॉर अस. ओके, उसमें ये प्रॉब्लम विल ट्राई टू फाइंड अ डॉक्स. ये है जो डिसीजन मेकर है वो फेड अप हो जाता है, ठीक है भाई तुमको जैसा करना है करो. बिकॉज इफ दे लीव एंड तो क्या होता है, एक तो वो इम्प्लीमेंटेशन फेल हो गया, देयर इज नो वैल्यू एडिशन फॉर अस एज अ आईटी प्रोवाइडर, क्योंकि हमें भी वो केस स्टडी हम किसी को दिखा नहीं सकते कि व्हाट वी डिड because it's not working and there is no recurrent revenue. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है.
That is the reason. But when it's come to abroad, these people are prepared कि Hmm. हमें अगर सॉफ्टवेयर करना है तो उसके पीछे 10 चीजें लगने वाली है, एंड Right. वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, देन ओनली दे टेक अ कॉल. दैट्स द डिफरेंस इज देयर. Right. Correct. या Absolutely. तो वो फर्क पड़ता है. तो स्टेबिलिटी तो आप चार नहीं, आप एक प्रोजेक्ट लो, देयर यू कैन गिव योर वैल्यू एडिशन. Hmm. क्लाइंट ने एक मांगो तो आप दो दो, बिकॉज क्लाइंट विल हैप्पी, इट विल रिटेन. यहाँ पे Exactly. आप 10 चीजें भी दो, इट वॉन्ट बी वैल्यूड. इट्स Right. अ अनफॉर्चुनेट फैक्ट. Right. Right. People in here in India don't value as much time as much your efforts and everything, right? So या that is या the हम thing. लोग बहुत बार सोचते हैं कि हम क्लाइंट को वैल्यू एडिशन दें, बट वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं नहीं करना करता है. चाहता है, तो Right. Right. वो हमारे लिए भी डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है. Right. Here in India. या या एंड कमिंग बैक टू आपने जैसे मेंशन किया था कि जो डेवलपर्स है सपोज फॉर एग्जांपल डेवलपर्स या फिर टेस्टर्स हो गए आईटी सर्विसेज कंपनीज में तो उनका ऐसा है कि बहुत 10 साल से मतलब दिस वाज अ आर्टिकल पब्लिश बाय मनी कंट्रोल उन्होंने उसमें बताया था कि जो फ्रेशर्स की सैलरी है वो ऑलमोस्ट 3.5 एलपीए थी ऑलमोस्ट 10 years ago एंड राइट नाउ ऑल्सो इट इज अराउंड मोर और लेस 3.5 to 4 lakhs per annum. तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है मतलब व्हाई इज द सैलरी नॉट इंक्रीज और क्या स्किल्स लैक करते हैं या इंडस्ट्री में ऐसा क्यों हो रहा है मतलब. Actually, I think there was some sentence made by maybe Narayan Murthy sir यस or राइट. someone 70 कि lakhs. इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है. एम्प्लॉयबल लोग नहीं है. लोग नहीं है. राइट. Okay, the even we face, it's not IT. Okay, even in the non IT roles, suppose we have a company, हमें भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में लगते हैं, अकाउंट्स में लगते हैं. हियर एक तो क्या है, पीपल आर इन मोर कंफर्ट जोन. दे आर हैविंग एम्बिशियस ऑफ, भाई एक तो कॉलेज में जाएंगे 5-6 लाख का. अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है, आजकल लोग एडमिशन एक्सवाईजी कॉलेज में 10 लाख 15 लाख इसके लिए भरते हैं, वहां पे कैंपस आएगा ना, हमें 15 लाख का पैकेज पैकेज मिलेगा. मिलेगा. राइट. बट दे डू नॉट सी दिस कि मेरे पास उसके लिए क्या स्किल है. क्या स्किल्स है. बिकॉज कॉलेज का टाइम देख के कोई आपको पैसे नहीं देने वाला, जस्ट सिंस यू आर पास आउट. यही बहुत बड़ा एक आई फील की एक अदरवाइज थॉट है. एंड मैं ये डेफिनेटली एग्री करूंगा कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है. इनफैक्ट देयर इज अ डायर नीड ऑफ गुड टैलेंट कि बट प्रॉब्लम इज द स्किल्स. एंड स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मैं अगर एक सब में ज्यादा बोलता हूं तो कॉमन सेंस. इट्स, मैं ये फ्रेशर्स के साथ नहीं बता रहा हूं आपको, आई एम टेलिंग वेरी रफ ट्रूथ. अगर वो 15 साल वाला भी जॉब का बंदा है जिसको एक्सपीरियंस है, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है. They are not fair to what their organization is done for them, or whatever communication. Like, there is a one incident happened. There was a one very senior employee working with us, and she was having 10 plus year of experience in a big four firm. Okay, and maybe she wanted to she got an opportunity, and obviously it was our mutual arrangement. It was a time stop arrangement we had done. It's okay, she could have told us that she wanted to go. We were okay. You know they will come like, uh sir, actually she was on a bench for 1 month, and she was feeling so insecure ki I will get a salary or not, and all those things. Right. Interesting. So how it came to us. Sir, actually, I have decided to start my own business, so I have to leave the company. See, I could immediately sense the person who got on a bench for 1 month and having that, what we say, insecurity about how she will survive next month. Right. Is business going to give her revenue from a one day? Right. No. Second day, we found her LinkedIn, started position at XYZ. Okay. So this is the common sense. Actually, we see, even I tell you, Pawan, even the problem is not only freshers, even these experienced people who are having 10 years, 15 years experience, they also don't carry the responsible attitude. Okay. And they cannot, they are in such a comfort zone that they cannot they are not going out of it. That is what example I wanted to give. They are not, if you ask them, you do something on one, they cannot do.
because they have stuck themselves in such a framework कि ये मेरा दुनिया में इतना ही, मुझे इतना है, मुझे यही करना है. They don't want to see the things beyond and they don't want to do. Same happening with freshers की यही देख रहे हैं, उनने में ही अटके पड़े हैं. उनको लगता है कि मैंने एक कोर्स कर लिया तो आई विल गेट दिस पैकेज. अरे भाई, आप अगर डिलीवर नहीं कर पाओगे तो what is the use? So I personally feel कि the people, and I give you one another example of there were there were some students from JICA, okay, a government college of Aurangabad, 3 of them, okay, and they did internship with us, okay. During internship they were so enjoyed. They did lot of projects for us. They कुछ भी नहीं, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है. Obviously we were not paying them anything, okay. And they were so intellectual. 3 of them got into IITs and NITs, okay. And they're drawing more than 30 plus package as a fresher in IBM. Okay. This is what I see कि ये person के attitude पे depend है कि उसको आगे करना क्या है. No education system is going to teach them. So common sense is very uncommon nowadays. Yeah, true. So this is very, very fair. It's not fresher. It's anyone into the industry. Right. So this is again my opinion, but this is what we have experienced so far during whatever the people we have met. Right. Absolutely. So coming to the second question, you mentioned about the developers or the freshers or even the experienced people in India, here in India, right? So what do you feel about what like, since you have hired people from other countries as well, right? It can be UAE, you are expanding into US as well, right? So what difference did you observe between comparing a fresher to fresher here and there and an experienced employee here and there? Like you mentioned, common sense is very uncommon right now, and they do not have empathy, they do not have the learning attitude, right? So what do you find something specific about people abroad, working and everything? See, basically एक तो क्या है कि उनका एक सीधा फंडा है. वो आपको अगर आपके वर्किंग आवर के 8 घंटे है ना, वो 8 घंटे से ऊपर 1 मिनट भी नहीं देंगे. ओके, दे विल नॉट इवन पिक योर फोन आफ्टर दैट. ओके, बट जो 8 घंटे देंगे ना, उसमें आपको 16 घंटे का आउटकम दे देंगे. ओके. इंडिया में क्या है, 8 घंटे अगर आपका ड्यूटी है तो 2 घंटा चलो चाय पे जाते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, चलो फिर बाद में अगर मैनेजर बोलता है, सी मैं एक देखता हूँ कि मैनेजमेंट को सब समझता है कौन क्या करता है. ओके, मैनेजमेंट में ये नहीं है कि भाई आपको 10 बजे तक बिठा के काम कराना है. ओके, बट फिर 10 बजे तक बिठाते तो मेरी कंपनी मेरे से बहुत ज्यादा ओवर टाइम करवाती है, मुझे पैसे भी नहीं देती है. अरे आप 8 घंटे को खुद को तो जस्टिस दीजिए. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्किल डेवलपमेंट पे क्या काम कर रहे हैं. एंड एज अ फ्रेशर की आप बात कर रहे हो, जब कोई फॉरेन का बंदा है एज अ फ्रेशर आता है ना, उसके पोर्टफोलियो में 10 से 15 प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे जो कि रियल टाइम एग्जीक्यूट हो चुके हैं. एंड दोज आर आल्सो नॉट सो HTML सॉर्ट ऑफ थिंग, सो क्रिटिकल सॉर्ट ऑफ थिंग कि जो AI में हो गए, फ्रंट एंड में हो गए. यहाँ पे अपने अगर आप कॉलेज प्रोजेक्ट्स देखोगे अपने यहाँ पे फ्रेशर्स के, दे आर लाइक HTML, CSS. अरे HTML, CSS का जमाना जाके 10 साल हो गए. अब कौन से दुनिया में? ठीक है, आप बोलोगे कॉलेज में आपने क्या किया इनहांसमेंट के लिए, व्हाई यू डोंट ब्लेम एनीथिंग. तो ये अप्रोच और एटीट्यूड का डिफरेंस है इंडिया एंड अब्रॉड. या तो वो जस्टिफाई है उनका. कैसा है, क्योंकि एक तो आवरली बिलिंग होता है यूएस यूके में, सो दे हैव टू जस्टिफाई एवरीथिंग. तो क्वालिटी ऑफ वर्क इज डेफिनेटली डिफरेंट एंड दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो बोलते हैं ना कॉमन सेंस. इफ दे डू नॉट लाइक एनीथिंग दे आर वेरी अपफ्रंट. ओके, इफ दे वांट टू गो अवे फ्रॉम कंपनी, सर आई एम गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी, आई वांट टू मूव, टोटली फाइन. बट जो इंडिया में बहाने दिए जाते हैं लाइक ओवरऑल एक अप्रोच के लिए, इट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. या तो ओवरऑल आप कॉमन सेंस की बात करो, स्किल्स की बात करो, क्वालिटी की बात करो, हर चीज में डिफरेंस तो है, डेफिनेटली है. वन शॉकिंग थिंग आई विल टेल यू. ओके, जो इंडियंस भी बाहर जाते हैं ना, they also become far better version of Indian. ओके, तो क्योंकि वहां के लॉज में उनको रहना होता है ना, राइट. तो ये भी एक फैक्ट है. ओके, सो वहां पे वो जस्टिफाई करेंगे चीजों को. तो वो थोड़ा सा डिफरेंस तो है. ओके.
बिल्कुल। Like we always see in Dubai, okay, अभी हम दुबई में क्या है कि it's very strict. राइट। अगर आप ऐसा like there is a zebra crossing है, हम्म। you have to, if you are walking, you हम्म। have to see the signal, and राइट। then अगर वो green है then only you can cross, क्रॉस। otherwise you have to pay the fine. Okay. ओके। Okay. अगर जहाँ पे सिग्नल नहीं है वहां पे फुट जो चल रहा है उसको फर्स्ट प्रियोरिटी है, कार हैज टू स्टॉप एंड you cannot split anywhere. Like there are 100 discipline rule. Like we say, हम वहां पे जाते हैं इतने डिसिप्लिन में रहते हैं. Okay. And once we even land on a Mumbai airport, we start fighting कि तू अंदर से क्यों घुसा इमिग्रेशन में. So राइट। it is very shocking to know why people are like this. हम्म। तो आप बाहर जाते हो, यू कंप्लाई टू, अब तो सब कॉमन सेंस आ जाता है. व्हाई हम्म। डोंट यू ब्रिंग दैट टू इंडिया. हम्म। वो आप वही छोड़ के आते हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत करेक्ट, होता है. करेक्ट। Absolutely agree with you. Yeah. या Great. This is the part one of the podcast with Mr. Ajinkya Kalantri from Syscort Technologies, India and Dubai. We are going to soon release the second part of the podcast. Please like this video and share it with all of your friends who are working in the IT industry. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you again and have a good day.